Hi everyone. Um, can the chat, before we start, can you guys please quickly tell me in the chat box if I'm audible? Okay, so hello everyone and welcome to CUET Exam Factor, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिलती है आपको CUET की कंप्लीट गाइडेंस। CUET की प्रिपरेशन करते समय हम सब चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा स्कोर करें और अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। For this, I would recommend you guys to join ExamFactor, which is a platform which provides you with complete and precise preparation. Now, before we move further, let me introduce myself to you. This is Bhargavi Mahto, and I am pursuing BA Honours Political Science from Miranda House College, Delhi University, and I'm currently in my first year. I appeared in CUET 2023 and achieved a 100 percentile in the subjects economics, English, political science, and history. Now, coming to the main question, the question of the moment. मैं यहाँ पर क्यों हूँ? Why am I here? Well, here at Exam Factor, I will be solving with you all the previous year question papers of the subject English from CUET 2023, wherein I will also share my experiences. मैं कुछ टिप्स और मेथड्स भी शेयर करूंगी और उन चीज़ों को बताऊंगी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को अपियर करते वक्त। Now, speaking of practice, ExamFactor has a series of mock tests as well, which are completely aligned with the CUET syllabus and difficulty level. ExamFactor का प्लेटफॉर्म भी CUET के प्लेटफॉर्म के जैसे ही डिज़ाइन किया गया है, जिससे आपको एग्जामिनेशन का एक कंप्लीट होलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है, सिमुलेशन मिलता है, सो दैट यू आर नॉट नर्वस ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन. So that is why I would recommend that you should visit the official website of the Exam Factor after this session and have a look at the offerings. Now, as we know कि CUET एग्जाम्स में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने फोकस करना है रिविजन और प्रैक्टिस पे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन. This is what I did and this is what I recommend you to do right now. To revise, the ExamFactor has crash courses in the subjects accountancy, economics, mathematics, physics, chemistry, bio, history, political science, English and general test. So basically सारे major subjects cover करते हैं ExamFactor के crash courses, which contain one-shot lectures for every chapter. आई वुड से कि ऐसे वन शॉट लेक्चर्स ना हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये सब कुछ कवर कर लेते हैं एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूटेगी नहीं. रिविजन विल बी क्विक एंड प्रिसाइज एंड कंप्लीट ऑफ कोर्स. एग्जाम फैक्टर की जो वीडियोस है उसमें भी आपको एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी पढ़ाती है जिससे आपको CUET सिलेबस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स पे गाइड करते हैं ये एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी. और साथ में हर टॉपिक से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते चलते हैं. तो योर प्रैक्टिस एंड योर रिविजन गोज हैंड इन हैंड. एंड सो आई वुड स्ट्रांगली recommend you guys visit the Exam Factor's official website. Now, without any further delay, let's begin solving some problems, shall we? So, here is the first question. Okay, this question is basically a comprehension based question. इसमें हमें एक पोएम दी गई है और इस पोएम को हमने पढ़ना है और उस पे बेस्ड 4-5 क्वेश्चन होंगे जिसको सॉल्व करना है. इजी राइट? सो इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस के लिए आई वुड सजेस्ट 2 मेथड्स. पहला तो if you are more comfortable in reading the passage first and then going to the questions, I would suggest read the passage first but read it quick. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, 5 मिनट नहीं लेना है, बहुत लंबा लंबा टाइम नहीं लेना है. जितने कम टाइम में जितना जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर सको, डू दैट. ओके. एंड द सेकेंड मेथड इज कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू शुड गो टू द क्वेश्चंस फर्स्ट. तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस बारे में पूछा गया है. एंड देन व्हेन वी कम बैक टू द पैसेज एंड वी रीड इट एक्चुअली, एंड दिस टाइम ऑल्सो वेरी क्विकली यू हैव टू रीड इट थ्रू. सो व्हेन वी रीड इट एक्चुअली हमें पता होगा कि हम किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, हमें क्या क्या आंसर्स चाहिए. ओके. सो फॉर द टाइम बिंग हम पहले एक पोएम को पढ़ लेंगे जल्दी से. दिस पोएम इज बेसिकली अबाउट, इस पोएम में जो पोएट है वो वर्ल्ड को एक स्टेज की तरह बताते हैं जहाँ पर सारे मेन और वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स, सबके अपने अपने एग्जिट्स और एंट्रेंसेस होते हैं. एंड देन द पोएट गोज ऑन टू टेल यू अबाउट
how a man is when he's a child, then how he is when he's a schoolboy, and then how he is when he's a lover, and then when he's a soldier. So let's give it a quick read. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. At first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms, and then the whining schoolboy and his satchel, and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. And then the lover sang like furnace, with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. Then a soldier full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation. So this was all about the poem. We'll move on to question number one now. Okay, so question number one says, the poet of the poem compares life to a journey, a game, a performance, a battle. Now, before I give the answer, I'd give you 10 seconds to answer yourself. And chat, I'm watching. Put your answers in the chat now, and let's see. So this was all. Okay, so I'm getting in the answers and your time's up. So the right answer is, let's see, ऑप्शन नंबर सी, अ परफॉर्मेंस. सो अब इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए. वील गो बैक टू आवर पोएम. यहाँ पर ना स्टार्टिंग में बोला है पोएट ने कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. नाउ स्टेज पे क्या होता है, स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है. मैंने देखा है कि कई लोगों ने ए आंसर किया है, अ जर्नी, विच आई अंडरस्टैंड कि क्यों कन्फ्यूजन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसने चार स्टेजेस के बारे में बात की है, चार स्टेजेस ऑफ लाइफ. लेकिन यहाँ जो हमारा फर्स्ट लाइन है, द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यहाँ पे स्टेज मीन्स परफॉर्मेंस वाला स्टेज. ओके, सो दैट इज़ वाई जो करेक्ट आंसर होगा वो परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि स्टेज पर क्या होता है, परफॉर्मेंस होती है. तो अगर वर्ल्ड एक स्टेज है तो लाइफ क्या है, एक परफॉर्मेंस. और द पोएट आगे ये भी कहते हैं कि एक एंट्री होती है हर इंसान की, एक एग्जिट होती है. एंट्री एग्जिट किस में होगी, इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंट्री एग्जिट होगी परफॉर्मेंस में. So the right answer will be performance for this question. I hope it's clear, guys. We will now move on to question number two. So, according to the poem, humans are A, unique and independent. Guys, while I read the options, jaldi jaldi apna answers नीचे type करो in the chat box, and then I'll give you 10 extra seconds and then we'll quickly discuss. Okay. According to the poem, humans are A, unique and independent, defined by their social roles, merely temporary actors, constantly changing identities. Okay, so your 10 seconds starts now. Okay, so I see answers coming in. Let us now discuss इसका answer. So इसका answer होगा option number C, merely temporary actors. Okay, I see some people commenting option number D, constantly changing identities. Constantly changing identities नहीं होगा, क्योंकि again हमें बोला गया है in the poem कि the people are merely players, right? एंड पोएम में लाइफ को एक परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया गया है. सो एक परफॉर्मेंस में जो एक्टर्स होते हैं वो बार बार, द वन एक्टर इन वन परफॉर्मेंस यूजुअली बार बार आइडेंटिटीज चेंज नहीं करता है, राइट? तो इसमें दैट इज़ वाई द आंसर विल बी मेयरली टेम्पररी एक्टर्स, क्योंकि द क्या कहते हैं, लाइफ इज, वर्ल्ड इज अ स्टेज, लाइफ इज अ परफॉर्मेंस, और इसमें हम सब सिर्फ अपना अपना रोल निभा के जा रहे हैं. तो हम अपने अपने टेम्पररी एक्टर्स हैं. वी आर नॉट परमानेंट, वी आर टेम्पररी एक्टर्स, and that is why merely temporary actors. Okay, so if there's any doubt, put in the chat box, guys. At the end of the session, I'll get back to it definitely. We'll now move on to question number 3. Okay, this is the solution. In the given poem, portrayal of human is as merely players, again as I told you, in the metaphorical stage of the world. The line "and one man in his time plays many parts" emphasizes the transient nature of our roles and identities. Transient का मतलब होता है temporary, changing, constantly changing. Okay, so now we move on to question number 3. The overall tone of the poem is
optimistic and hopeful, cynical and disillusioned, humorous and light-hearted, reflective and philosophical. Okay guys, I am giving you थोड़ा सा time. क्विकली अपना आंसर डाल दो चैट बॉक्स में, सही हो गलत हो वो हम देख लेंगे, ठीक है? क्विकली गाइज. Okay, so the answer is option number D, which is reflective and philosophical. So पहले हम यहाँ solution पढ़ लेते हैं. The overall tone of the poem is reflective and philosophical. In this poem, the poet contemplates the stages of human life and stages of human life, comparing it to a play in which everyone has roles to perform. राइट. सो यहाँ पर बेसिकली वो कहते हैं कि बिकॉज सीधा पोएट वो बता रहे हैं कि हम बचपन में ऐसे होते हैं, स्कूल बॉय में ऐसे होते हैं, लवर में ऐसे होते हैं, फिर उसके बाद सोल्जर में ऐसे होते हैं. तो ही इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग on his life also, on others life also, कि okay, this is what people do when they're at this stage, at this stage, at this stage. तो एक रिफ्लेक्शन का पार्ट दिख रहा है. और फिलोसॉफिकल है क्योंकि उसको कंपेयर किया है with the concept of life being merely a performance, the world being a stage. तो इसीलिए reflective and philosophical. I see people commenting B. Bravo guys, you're right. Okay, so now we move on to the next question, question number 4. It is again on the same, based on the same poem. Identify the literary device used in the line, sighing like a furnace. Simile, metaphor, personification, hyperbole. So now guys, while in the meantime, while I'm explaining the 4 options, in the meanwhile, जो भी तुम लोगों को आंसर लग रहा है, put it in the chat box quickly. Okay. So I'll start with hyperbole. Hyperbole is basically exaggeration. So इसका एक काफ़ी common example है कि I'm so hungry I could eat a horse right now. So of course कोई actually horse नहीं खा सकता है, but exaggeration. So this is one figure of speech that is often used. देन पर्सोनिफिकेशन, जिसमें एक नॉन लिविंग चीज़ को या नॉन ह्यूमन चीज़ को एक ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है. जैसे इफ़ आई से कि किसी की बॉटल इज़ वेरी वार्म, सो एंड एवरी टाइम यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, इट्स वार्म समहाउ, इट्स वेरी हॉट समहाउ. तो उसके लिए आई कैन यूज़ द पर्सोनिफिकेशन दैट हर बॉटल ब्रीथ्स फायर. सो द बॉटल कैन नॉट ब्रीथ, राइट? ब्रीदिंग इज अ ह्यूमन एट्रीब्यूट, बट आई गेव इट टू बॉटल, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया. मेटाफर, जैसे कि हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में भी देखा था कि वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये एक मेटाफर है. तो नॉट डायरेक्टली सेइंग, मतलब नॉट लिटरली मीनिंग इट, बट या. एंड सिमिली इज व्हेन यू कंपेयर, like जैसे यहाँ दिया. Okay, I'm going to reveal the answer now. I see people giving the answer A. It's right. So yes, simile is हमारा आंसर. जैसे यहाँ दिखा है sign like a furnace, तो कहीं भी अगर आपको like दिख रहा है या as much as दिख रहा है, जैसे कि she's as big as this thing, या she's as smart as this thing, she's as small as this thing. तो as small as big as, या फिर स्मार्ट, लाइक. तो जब ये लाइक और कंपैरिजन वाले वर्ड्स दिखते हैं तो ये सब होता है सिमिली. ओके, सो हियर द आंसर इज ए. सो whoever answered this, bravo. I can see Shrishti. Congratulations Shrishti. We move ahead. This is question number 5 और यहाँ पे हमें मैच करने हैं words with their meanings in column 2. So column 1 में mewling, satchel, whining unwillingly, school bag, high pitched sound, reluctantly, cry feebly. Okay, so ऐसे questions में guys, there's a tip. You do not have to go on matching सारे 1 2 3 4 with column 2 and then फिर सारे options को एक करके देखो. मैच now कभी कभी ऐसा होगा कि आपको फर्स्ट वर्ड का मीनिंग समझ आ रहा होगा, आपको फर्स्ट वर्ड का मैच समझ आ गया है, या फिर कभी ऐसा होगा कभी सेकंड का, कभी थर्ड का, कभी फोर्थ का. चारों में से जिसका भी मैच समझ आ रहा है, सी दैट इफ यू आर श्योर कि ओके इसका सही आंसर तो यही होगा, गो टू द ऑप्शंस. देखो कि वो सही ऑप्शन, वो सही जो पेयर है मैच्ड, वो किन किन ऑप्शंस में है. यूजुअली वो ऑप्शन देखकर ही एक या दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे. सो यू नाउ हैव टू नॉट गो थ्रू ऑल द 4 ऑप्शन, तो आपका टाइम बचेगा. एंड दिस यू कैन डू विथ एवरी, लाइक पहले 1 को मैच कर लिया, फिर 2 को मैच कर लिया, या पहले 3 को मैच कर लिया, फिर 2 को मैच कर लिया. यू कैन डू दिस. सो यहाँ पर क्विकली पुट द आंसर इन द चैट गाइज. I'll wait for 2 seconds because मैंने explain किया था अभी, so you had time. Okay, so I see
the answers coming in. So yes, यहाँ पर पहले तो देखते हैं एक एक के मीनिंग. ठीक है. म्यूलिंग जो था वो स्टार्टिंग में यूज हुआ था. वेट, we'll go back to the poem. म्यूलिंग जो था वो यहाँ यूज हुआ था. एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड puking in the nurse's arm. सो अगर आपको म्यूलिंग का मीनिंग नहीं भी पता है तो जो बेबी है वो क्या करेगा, वो हाई पिच साउंड ही निकालेगा. ऑफ कोर्स वो फीबली क्राई नहीं करेगा. मतलब बेबीज क्राई विद देयर हार्ट, दे क्राई वेरी लाउडली. सो लेट अस अज्यूम कि म्यूलिंग इज हाई पिच साउंड. सो 1 से 2 मैच कर रहा है सिर्फ सी में. लेट अस सी. बट म्यूलिंग इज, oh oops, so, sorry guys, mewling is actually, हमें यहाँ पे whining भी दिख रहा है. So whining is actually high pitched sound. Mewling is crying feebly. So like I got confused guys, you can also get confused. So don't be too quick to mark your answers. Always recheck with 4 options. Okay. So whining हमको दिख गया कि high pitched sound है, तो 3 को हम 2 से मैच कर लेंगे, which is in option number A. Yes, guys, it's A. The chat, good going. So yeah, whining is high pitched sound, mewling is cry feebly, satchel एक school bag होता है, and unwillingly is reluctantly, ना चाहते हुए. So the answer is option A. Good going, guys, good going. We now move on to question number 6. Again, a passage. Quickly passage को read कर लेंगे and then we'll move on to the questions. Okay, so the third great defect of our civilization is that it does not know what to do with its knowledge. Science has given us powers to fit for the gods, yet we use them like small children. For example, we do not know how to manage our machines. Machines were made to be man's servants, yet he has grown so dependent on them that they are, in a fair way, to become his masters. Already, most men spend most of their lives looking after and waiting upon machines, and the machines are very stern masters. They must be fed with coal and given petrol to drink and oil to wash with and meals when they expect them, and they grow sulky and if they and refuse to work, or burst with rage and blow up and spread ruin and destruction all around them. So we have to wait upon them very attentively and do all that we can to keep them in a good temper. Already we find it difficult either to work or play without the machines, and the time may come when they will rule us altogether, just as we rule the animals. So this was the passage. Now it basically talks about how हमारी civilization का जो सबसे बड़ा डिफेक्ट है, सबसे बड़ी खामी है, वो ये है कि उसे पता ही नहीं कि उसे अपने ज्ञान के साथ, अपने नॉलेज के साथ करना क्या है. साइंस के थ्रू हमें मशीन्स मिली हैं, मशीन्स जो कि हमारी हेल्प के लिए थी, विच वर मेंट टू बी आर सर्वेंट्स. बट जैसे ही हमारी हरकतें, मतलब द वे दैट वी हैव इवॉल्व विद द मशीन्स, it's more like the equation has gone the other way around. Now it seems like at some points that we are the servants of the machine. So this is the entire point of the passage. We now move on to the question. Okay, so choose the correct word to explain defect as stated in the passage. Defect as stated in the passage. गाइज यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमेशा यहाँ मेंशन क्या होता है, एज स्टेटेड इन द पैसेज. सो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर खैर वो क्या कहते हैं, खैर वो पोजीशन नहीं है जहाँ पर डिफेक्ट के 2 मीनिंग सही निकल रहे हो. बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक वर्ड दिया हो जिसके 4 में से 2 मीनिंग है जो उस वर्ड पे सही बैठ रहा है, लेकिन पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग आएगा ना वो हमेशा एक ही होगा. सो ऑलवेज इफ यू आर एवर कंफ्यूज बिटवीन 2 और more मीनिंग्स, गो बैक टू द पैसेज, एक बार ही रेफर करो कि उसको किस सेंस में यूज़ किया गया, एंड उस सेंस में देखोगे फिर वापस ऑप्शंस, तो यू गाइज कैन डू इट. सो यहाँ पे आई एम सीइंग द आंसर शॉर्ट कमिंग, एंड येस इट्स करेक्ट. शॉर्ट कमिंग डिफेक्ट में जैसे कहा था खामी, तो शॉर्ट कमिंग होता है. In the passage, the word defect is used to describe a flaw or inadequacy within a civilization. It suggests that one of the shortcomings or weaknesses of civilization is its inability to effectively utilize the knowledge it is required. So, I'm very proud of you, chat. You guys are acing it. Okay, so we move on to the next question, question number 7. It says, what should be the expected behavior to keep machines in good temper? Now, guys, while I read the option again, put your answers in chat. Okay, so A, leave them alone, let them work on their own, allow them human company, wait upon them attentively. So quickly put your answers in the chat, guys, and I'm waiting for 5 seconds this time. Okay,
So we move on. The correct answer is option number D. Option D is wait upon them attentively. So ये क्यों है? I think the solution here explains it very well. So I'll just read it out. If there's any doubt, put in the chat, guys. I'll get back to it at the end. The passage mentions how machines require attentive care and maintenance to keep them in a good temper. It also mentions that humans must wait upon the machines very attentively and do all that they can to ensure the machines are well maintained and operational. सो यस वेरी क्लियर कि मशीन्स को जैसे ही बताया था कि जैसे उन्हें समय पर खाना ना दो, मतलब उन्हें समय पर कोल फीड ना करो या ऑयल ना दो, तो फिर दे बर्स्ट आउट एंड things lead to ruin. So that is why you need to wait upon the machines very, very attentively and do all that we can to ensure that the machines are well maintained and operational. Okay, so the correct answer is option B. I see the chat has answered rightly. So again, you guys are acing it, guys. Okay, so we move on to the next question, question number 8, and it is, what, according to the writer, has become the agony of man? Uh, Machines have become their slaves, machines are being controlled by them, machines are their masters, machines are dependent on them. So यहाँ पर I think see, agony का meaning is a negative meaning. Agony is always a negative word. It basically means कि क्या पेन बन गया है मैन का, what is the problem that the man is facing right now. So now यहाँ पर ना elimination यूज कर सकते हैं. So let us see कि elimination इसमें कैसे यूज होगा. In the meanwhile, put your answers in the chat, guys. So yes, machines have become their slaves. ये इससे मैन को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है? ह्यूमन नेचर, राइट? सो इससे प्रॉब्लम तो होगी नहीं. सो ए हमारा ऑलरेडी हट गया. नाउ मशीन्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय देम. ऑफ कोर्स मशीन्स को बनाया ही गया था ताकि मैन उसे कंट्रोल कर सके, मैन उसको अपने हिसाब से यूज कर सके, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. तो बी से भी उसे पेन क्यों ही होगा? तो बी भी हट गया. वी स्किप सी, वी गो ऑन टू डी कि मशीन्स आर डिपेंडेंट ऑन देम. This could be the right answer, but really, guys, will this really be a pain of man ki machine us pe dependent hai? Now we compare this option with C. Machines are their masters. Which will cause more pain to man? Machines are the masters या machines are dependent on them? Of course, machines are the masters will cause more pain. So that is why हमारा आंसर हो जाएगा machines are their masters. क्योंकि of course man would not like something that we have ourselves invented to be our masters, right? Machines were invented to help us carry out our things conveniently. So that is why option number C. So yes, correct option is option number C. Okay, we then move on to question number 9. Which of the following has been personified as the master of mankind? Science, machines, civilization, knowledge. I'm giving you 5 seconds, guys. Again, quickly put your answers in the chat. Guys, keep yourselves hydrated. Garmi बढ़ रही है. We need to take care of our health also. So we don't want anyone falling sick before exams, right? Okay, so we now move on to what's the answer. The correct answer is option B. So यहाँ पर the author describes machine as demanding and needing constant attention, comparing them to stern masters that require meals and oil to wash with. Therefore, machines are personified as the masters of mankind. So yes, this is the answer. Machines को personify किया as the master of mankind. Now we move on to question number 10. Very good, guys. I see you answering B. Great going. We move on to the next question. Which of the following adjectives have been used in the passage to explain the temperamental nature of machines? Rigid, timid, stern, stupid. So now adjectives क्या होते हैं? क्विक बेसिक रिविजन कर लेते हैं. एडजेक्टिव्स बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन को या फिर किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं. सो यहाँ पर उनकी क्वालिटी को बताते हैं. सो यहाँ पर आई एम अगेन गिविंग यू 5 seconds. क्विकली पुट द आंसर in the chat and then we'll go see the solution. Okay, great, great, great. I see right answers coming in. Bang on, guys. And your answer is absolutely correct. Option C is the right answer, stern.
वेरी स्टर्न मास्टर्स, इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी बारी बात कर चुके हैं कि मशीन्स आर वेरी स्टर्न मास्टर्स, ऑयल चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, सही टाइम पे फीड करो कोल। सो यस, वेरी स्टर्न मास्टर्स, गुड गोइंग गाइज, ग्रेट गोइंग। वो बिग पैसेज नाउ, कोई ज़रूरत नहीं है गाइज इससे डरने की बिल्कुल भी। We'll quickly read through this, and if ever big passages like this scare you, you can always go to the questions first and then come back. It's your choice every time. Okay, so question 11, we read the passage. Ancient Egypt was the birthplace of one of the world's first civilizations. This advanced culture arose about 5,000 years ago in the Nile River Valley in northeastern Africa. It thrived for over 2,000 years and so became one of the longest lasting civilizations in history. The mighty Nile River was the lifeblood of ancient Egypt. Every year it overflowed and deposited a strip of rich black soil along each bank. The fertile soil enabled farmers to raise a huge supply of food. The ancient Egyptians called their country Kemet, meaning blank land, after the dark soil. The Nile also provided water for irrigation and was Egypt's main transportation route. For all these reasons, the ancient Greek historian Herodotus called Egypt the gift of the Nile. The ancient Egyptians made outstanding contributions to the development of civilization. They created the world's first national government, basic forms of arithmetic, and a 365-day calendar. They invented a form of picture writing called hieroglyphics. They also invented papyrus, a paper-like writing material made from the stems of papyrus plants. The Egyptians developed one of the first religions to emphasize life after death. They built great cities in which many skilled architects, doctors, engineers, painters, and sculptors worked. So, phew, big passage. This passage is about basically ancient Egypt. वो बताता है कि ancient Egypt का culture कैसा था, how it was one of the like oldest religions जो focus करते थे on life after death. उसे Greek historian Herodotus ने gift of the Nile भी कहा है. Ancient Egyptians अपने आप को Kemet कहते थे, blank अपनी country को Kemet कहते थे, which is blank land after the dark soil. And how Nile उनका primary source of transportation था. So we move on to question number 11, which is the best known achievements of the ancient Egyptians, however. Oh, okay. Guys, the passage is continued on. The best known achievements of the ancient Egyptians, however, are the pyramids they built as tombs for their rulers. This we all have heard about the mummies and how the pyramids were very extravagant and very luxurious. The most famous pyramids stand at Giza. These gigantic stone structures, marvels of architectural and engineering skills, have been preserved by the dry climate for about 4,500 years. They serve as spectacular reminders of the glory of ancient Egypt. So, यहाँ पूछा गया है कि the Egyptian civilization lasted for. Now, इसका straight up answer होगा. तो while I go back to the paragraph to refer to it, you guys quickly put it in the chat box. Okay, what's the answer? So, यहाँ पे हमको second statement में दिख रहा है. This advanced culture arose about 5,000 years ago. So, about 5,000 about 5,000 years ago. लेकिन this is not the answer, guys. I confused you guys. 5,000 years ago, आज से 5,000 साल पहले वो एडवांस जो सिविलाइजेशन थी एंशिएंट इजिप्ट की, वो आज से 5,000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, बट इट थ्राइव्ड फॉर ओवर 2,000 ईयर्स. सो उसका जो टाइम पीरियड था वो था 2,000 ईयर्स का. तो इसका आंसर होगा ओवर 2,000 ईयर्स. Very good, guys. I see you guys commenting the right answers, and I'm so happy. Good going, guys. So yes, the correct answer is option D, which is it thrived for over 2,000 years. Now, we move on to the next question. While I read out the options after reading the questions, put your answers in the chat box, okay? Choose the option that is incorrect. The Nile River was considered the lifeblood of ancient Egypt because. Now guys, before you answer, ये बात ध्यान रखना कि वहाँ पूछा है choose the option that is incorrect, not correct. Okay? ये चीज़ काफ़ी ध्यान रखनी है एग्जाम के टाइम पे भी. कई बार नर्वसनेस में हम भूल जाते हैं देखना कि इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, गलत मार्क करके आ जाते हैं इवन दो वी नो. सो रिमेंबर दिस अक्रॉस योर सब्जेक्ट्स, अक्रॉस योर पेपर्स. शांत मन से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है. डू नॉट बी इन अ हरी. कुछ छोड़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है. इनकरेक्ट को इनकरेक्ट ही पढ़ना है. ओके, सो द ऑप्शंस आर, इट वाज द मेन ट्रांसपोर्टेशन रूट,
It has black land. It caused havoc when it overflowed. It provided fertile soil and water for irrigation. So I'm again giving you guys 5 seconds again this time. Quickly put it in the chat box what you guys think is the right answer. The question is choose the option that is incorrect. The Nile River was considered the lifeblood of ancient Egypt because. Okay, I see the answers coming in, and great. I see the answer C coming in, and whoa, you are right again. Great going, guys, great going. I'm so proud of you. Option C is incorrect because while the Nile did occasionally flood excessively, causing some challenges, the overall impact of its annual overflow was positive. So, yes, good going, guys. We move on to question number question number 13. And the question number 13 says, in the passage, the word gigantic means small, gorgeous, huge, ancient. So, the word gigantic is basically used to refer to बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें. And अगर आप यहाँ context में भी देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने कहा है these in the second paragraph नीचे से third line में बोला है these gigantic stone structures marvels of architectural ला ला ला. उसके जस्ट पहले का सेंटेंस देखोगे ना तो वहाँ लिखा है मोस्ट फेमस पिरामिड स्टैंडर्ड गीजा. पिरामिड्स को अगर हम कंपेयर करेंगे इवन इफ मान लीजिए कि आपको गाइगैंटिक का मतलब नहीं पता है, पिरामिड्स को आप स्मॉल तो बोलोगे नहीं, गॉर्जियस में भी बोल सकते हो, एंशियंट में भी बोल सकते हो, बट यहाँ पर वो नहीं बोला गया है. यहाँ पर गाइगैंटिक का मीनिंग होता है समथिंग ह्यूज, समथिंग वेरी बिग. सो द आंसर इज सी. यस यू आर राइट सृष्टि. यस सृष्टि यू आर राइट, इट्स सी. यस, great going guys, great going, very good. So yes, the answer is option C. We move on to the next question, question number 14. So yes, the best known achievement of the ancient Egyptians is the creation of the world's first national government, the building of great cities, the building of the pyramids, the contribution to the development of civilization. So quickly put in the chat guys what's the answer, and we will quickly go back to the para ones to see what's the answer. So यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि the best known achievement of the ancient Egypt is. Best known achievement ऐसा word यहाँ दिख पा नहीं रहा है. We'll go back to the full para, and yes, here in the para we see that the best known achievements of the ancient Egyptians, however, are the pyramids they built as tombs for their rulers. तो best known achievement क्या है? Best known achievement है the building of the pyramids. So the correct answer will be option number C. I see people commenting creation of world's first national government. I understand the confusion, and इसी confusion को avoid करने के लिए हम जब भी कोई question पढ़ते हैं इस type का, तो एक बारी अगर हमारे पास time है तो we will always try to just confirm once, क्योंकि पैरा वहीं पर है. वी डू नॉट वांट यू लूजिंग मार्क्स ऑन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आंसर सामने के सामने है. ओके गाइज, सो द आंसर विल बी सी, द बिल्डिंग ऑफ द pyramids. Passage explicitly states that best known achievements of the ancient Egyptians, however, are the pyramids they built as tombs for their rulers. So yes, we move on to question number 15. Again matching the column है. Remember the trick I told you guys, एक match करो, बिल्कुल श्योर हो जाओ उसके बारे में, एंड देन फिर उससे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, एंड दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. सो while I read out the columns, quickly put in your answers. So column number 1 is hieroglyphics, papyrus, kemet, pyramids. Column 2 में है paper like writing material, form of picture writing, tombs built for rulers, and black land. So यहाँ पर the one thing that I remember from the passage is kemet को ना, kemet was the name of the country जो वो अपने आप को बुलाते थे ancient Egyptians. तो वो ancient Egypt को kemet बुलाते थे जिसका मीनिंग था black land. तो 3 तो भाई 4 से हमने मैच कर लिया. सो डी में दिख रहा है 3, एक डी में दिख रहा है कि 3 4 से मैच्ड है, और एक ए में दिख रहा है कि 3 4 से मैच्ड है. तो बी और सी तो सही हो नहीं सकते, बी और सी अपने आप एलिमिनेट हो गए. नाउ वी गो टू पिरामिड्स. पिरामिड्स क्या थे? टूम्स बिल्ट फॉर रूलर्स थे, क्योंकि पिरामिड पेपर लाइक राइटिंग मटेरियल तो हो नहीं सकता, और पिरामिड एक फॉर्म ऑफ पिक्चर राइटिंग भी नहीं है. तो पिरामिड क्या है? टूम्स बिल्ट फॉर रूलर्स. तो 4 मैच हो गया 3 से. नाउ 4 3 से मैच ए में है, डी में 4 को 1 से मैच किया है, तो ऑटोमेटिकली ए हमारा सही आंसर हो जाता है. बट स्टिल जस्ट टू बी श्योर
we'll see whether what does it match 1 and 2 with. 1 को वो मैच करता है 2 से, which is hieroglyphics with a form of picture writing, जो कि बिल्कुल सही है. Hieroglyphics was a form of picture writing introduced in ancient Egypt, and papyrus was of course paper like writing material, again introduced in ancient Egypt. 2 को 1 से मैच किया गया है. So 1 2 2 1 3 4 4 3, काफी x फॉर्म में इसको मैच किया गया है. बट यस, A is the correct answer, and yes, that is what is seen here. And that brings us to the end of our live session, to the end of PYQs. And for the last question, I've seen that people have answered option A. Congratulations, guys, you were right. Very happy with your responses. Keep going, and thank you so much for joining in ExamFactor. I would again remind you about our crash courses and mock tests. Do refer to them अगर आपको revision चाहिए, practice चाहिए, precise revision practice चाहिए. टाइम बचेगा आपका. आपका जो कोर्स है वो वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू पे काफ़ी कम टाइम में काफ़ी प्रिसाइजली एक्सपर्ट फैकल्टीज कवर करेंगे. सो after this lecture, I strongly recommend you guys quickly go visit the Exam Factors official website and get a hang of what everything is all about. I'll meet you guys again tomorrow right here on Exam Factor, and thank you so much, guys. Are there any doubts, guys? You can put it in the chat box, or else we'll end the stream. Okay, I see there are no doubts. I'll be coming live again tomorrow, and we'll connect again. Till then, keep practicing, keep learning, and do visit ExamFactor's official website to get ahead in your preparation. Thank you so much, guys. Good night.